आज इस वीडियो लेक्चर में हम ए के यू ई बी अप्रैल में एग्जामिनेशन 2018 का पेपर फिजिक्स 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारे पास किस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है। So the question number 1 is obviously from our chapter number 10, that is simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। If the particles of the medium moves back and forth, so again हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन मौजूद है, और डेफिनेशन कौन सी है, लेट्स सी। ऐसी वेव जिसमें जब वो प्रोपगेट करे किसी मीडियम में से, और उस मीडियम के पार्टिकल्स अगर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि हमने प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन किया था जहां हमें कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सो उस वेव को हमने नाम दिया था दैट दोज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। एंड यहाँ हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, longitudinal wave. And longitudinal waves and transverse wave, as we know that both waves are the types of mechanical wave. So let's come to question number 2. एंड इनडायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो चीज़ पूछी गई है वो प्रीवियस ईयर के 2019 के पेपर के अंदर भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। In this question, we have a mechanical wave that moves from lighter medium into the denser medium. एक वेव है जो कि लाइट मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ मूव कर रही है, and the process involved is known as refraction of wave. So we have to state that what are the changes in three basic characteristics of the wave that occurs during this process. So as we know that the frequency always remain constant, rather whether the wave is traveling from lighter to dense medium or denser medium into the lighter medium. These two characteristics are directly proportional to each other. सो लाइट मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाते हुए इन दोनों के अंदर डिक्रीज हो जाता है, वेवलेंथ विल डिक्रीज एज वेल एज स्पीड ऑफ द वेव. सो 1 and 2 is the correct answer for this question. And obviously this is our chapter number 11, simple harmonic motion. Sorry, chapter number 10, simple harmonic motion. So question number 3, the characteristic of sound. So this is our chapter number 12, 11, sound. Or we have to describe or identify the characteristic of a sound by which two sound waves of the same loudness and same pitch, दो ऐसी sounds जिनकी loudness और pitch same हो, but still we can identify or distinguish between them. So the characteristic of that sound is known as quality. इससे प्रीवियस हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, दैट आर लाउडनेस दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड द पिच दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. अगर दो या दो से ज़्यादा साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, बट स्टिल वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द दो साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. Okay, so let's come to question number 4. And this question number 4 is from chapter number 11, sound. The definition हमें सिंपल से पूछी गई है यहाँ पर. So definition सिंपल सा क्वेश्चन है, एक definition पूछी जा रही है in which the amount of sound energy transmitted per second through a unit area which is held perpendicular in the direction of sound wave is called the intensity of the sound.
सिंपल सी हमारे पास एक डेफिनेशन पूछी जा रही है. लेट सपोज एक साउंड वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है इनटू अ मीडियम. And as we know that sound is a type of energy, sound is a wave, and we know that wave is a carrier of energy. So sound is taking energy from point A to point B. If we held an imaginary area perpendicular to the direction of the sound wave, so the amount of energy that is passing through that unit area in unit time. So this is termed as the intensity of the sound. And if you recall the SI unit, so SI unit हमने पढ़ा था, इसकी जो SI unit होता है that is watts per meter square. So quickly come to question number 5. In this diagram, the angle of incidence is 40. So this is the angle that is 40. And the angle of refraction will be, हमें पूछा जा रहा है कि angle of refraction की क्या possibilities हो सकती हैं. So as we can see that light is traveling from air into the glass. Air से glass की तरफ travel कर रही है, and we know that air is a rare medium while the glass is the denser medium. Glass जो है वो dense medium है. And we know that whenever light wave traveling from rare medium into the dense medium, so it cannot pass straight through it, rather it will bend, and the bending is towards the normal. Bending हमेशा towards the normal होती है. And डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो इस तरह की बेंडिंग के अंदर एंगल आई हमेशा बड़ा होता है फ्रॉम एंगल आर. एज वी कैन सी दैट ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल. और टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होने की सिंपल सा रीज़न यही हुआ कि जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे इन रिफ्रैक्शन का, so obviously this will be smaller than the 40 degree. So we have option 1 in which the option A is the correct answer. And this question is from chapter number 12, Geometrical Optics. So let's move to question number 6. Okay. So in question number 6, that is related to our chapter number 12, Geometrical Optics. और इस सवाल के अंदर बात कुछ इस तरह से हो रही है that when a white light passes through the prism, the white light pass की जाती है prism में से, so it bends into the 7 colors. So prism होता है वो इन लाइट को स्प्रेड कर देता है, इन लाइट को जो है वो 7 कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देता है, in which we have 7 different colors. So let's assume these are the 7 colors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So ये कुछ इस तरह से जो है वो 7 कलर्स के अंदर लाइट बैंड हो जाती है. सो लेट्स से वी हैव द वाइट लाइट जो कि इस तरह से बैंड हो जाती है, इन विच दिस इज द रेड कलर and following the orange, yellow, green, blue, indigo, and finally we have violet color. So the bending of color increases as the ऑप्शन ए बी सी डी में से हम सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट या इस डायग्राम के अंदर अगर हम देख लें तो व्हाइट लाइट की डायरेक्शन और इस रेड लाइट की डायरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है. जबकि अगर हम यहाँ पर वॉयलेट कलर की लाइट में देखें तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड हुई है. इट्स मीन कि रेड लाइट जो बेंडिंग है रेड लाइट के अंदर वो कम है, जबकि वॉयलेट के अंदर जो बेंडिंग है वो ज़्यादा है. सो अगर हम इसी बात को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में अगर हम देखें, सो लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. लाइट की अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज लो, while the frequency of the violet light is high. फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट लाइट की हाई होती है. and with wavelength this is inversely proportional. This means that frequency will be low and the wavelength will be high. Similarly यहाँ frequency high है वॉयलेट कलर की, तो जो wavelength है obviously this will be low.
So अब अगर हम देखें तो we can conclude this diagram in such a way that the bending is in directly proportional to the frequency. यहाँ पे अगर हम देखें बेंडिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के साथ. जिसे अगर हम यहाँ देखें कि रेड कलर के अंदर बेंडिंग सबसे कम है बिकॉज फ्रीक्वेंसी उसकी लो है, और वॉयलेट कलर के अंदर अगर हम देखें तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाई है और उसमें बेंडिंग भी ज़्यादा होती है, तो बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. सो दिस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस सेज दैट बेंडिंग विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. जबकि यहाँ अगर हम देखें रेड लाइट की जो वेव लेंथ है वो हाई है और वॉयलेट की जो वेव लेंथ है इट इज लो. सो जैसे जैसे वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे साथ साथ जो बेंडिंग है लाइट की वो इंक्रीज होती जाती है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6, that is in which white light is spreaded into 7 colors and the bending of light is directly proportional to frequency and the bending of light is inversely proportional to wavelength. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, जबकि स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ द वेव greater will be the bending of light. So this whole process that जिसकी यहाँ बात हो रही है, this process is known as dispersion of light. Okay, so question number 7 की तरफ move करते हैं. Question number 7 in which this is also from chapter number 12, Geometrical Optics. In the diagram, if an object is placed at 2f, एक object है जिसको हमने 2f पर place किया है and we have a converging lens. अगर हम अपने उन journal cases को याद करें in which whenever we place an object at 2f, अगर हम object को 2f के ऊपर place करते हैं, so by using the mirror lens formula or by using the rules for the image formation in a convex lens, we can easily state that the image will be formed at 2f. अगर object को हम place करते हैं 2f के ऊपर, object is placed at 2f, so the image position of image will also be at 2f and the size and nature of that image will be equal to the object while the nature will be real and inverted. So let's see क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर. Then what will be the distance between the optical center and the image of the object? So optical center से लेके image तक का distance हमें पूछा है. अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस वी नो दैट इट इज फोकल लेंथ दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट इमेज फॉर्म होगी एट 2f. सो 2f मीन्स 2 multiplied by 10. So the position of image is 20 centimeters. So the correct answer for this question is option C, 20 centimeters. Okay, so let's move to another question, that is question number 8. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम गिवन है डिफेक्टेड आई की. सो एज वी कैन सी दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. इमेज जो फॉर्म हो रही है इस आई में इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है. And we know that whenever the image is formed behind the retina, the defect in the eye is far-sighted eye or long-sighted eye. And if we recall the causes of this defect, causes की बात करें, so causes में हमने पढ़ा था that जो eyeball है, it is too small. eyeball अगर too small हो और साथ साथ जो eye का lens होता है, it is too thin, जिसकी वजह से लाइट प्रॉपर बेंड नहीं हो पाती, बहुत कम बेंडिंग होती है लाइट में और वो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म नहीं कर पाती आई. सो फॉर दिस करेक्शन वी यूज कन्वर्जिंग लेंस. हमेशा हम कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते हैं ताकि इन रेस को कन्वर्ज कर सकें एट द रेटिना ताकि इमेज हमें क्लियर नजर आए. एंड वी नो दैट कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस इज आर convex lens.
So the correct option for this question is option A, that this eye is long-sighted eye and the lens used for correction will be convex lens. So let's move to another question, or इस question में let's see what we have to do. Or this is our question from chapter number 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. साथ साथ ये क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है. एंड आवर चैप्टर नंबर 13 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So, which of the following statement is false? We have to identify the wrong statement about the electric field lines. So, first of all, they move from positive, they move towards the negative charge and they move away from the positive charge. बिल्कुल सही characteristics लिखा हुआ है about electric field lines. They are imaginary lines, absolutely correct. और साथ साथ they are the vector quantities. They move from positive to the negative charge. The correct option or the false statement about the electric field line is that they cross each other. जबकि हमने पढ़ा था कि these are the imaginary lines that never ever intersect with each other. So question number 9, the correct option is A. So in question number 10, a simple definition is required of the capacitor. So as we know that what is capacitor? Capacitor is a simple device that is used to store electric charges. एक simple सी device है capacitor जो कि most of the electric components या most of the electrical devices के अंदर as a component use होती है. So इस device का काम होता है कि वो charges को store कर सके. Okay, so let's move to another question, that is question number 11, and this question 11 is from our chapter number 14, current and electricity. Which of the following gave the equivalent resistance of 2 ohms? हमें किस ऑप्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ohms के बराबर आएगी. सो दिस इज आवर सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन. ये हमारा सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए द फॉर्मूला इज R1 प्लस R2. इनको अगर हम ऐड करें सो वी विल गेट 8 ohms. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. And in this question we have a parallel combination. Parallel combination के अंदर जो हमारी total resistance होती है it is equal to reciprocal of each resistance. So इसे हम solve करते हैं. 1/4 plus 1/4, that will be equal to 2/4, and by reciprocating on the both side the resistance in parallel is equals to 4/2 equals to 2 ohms. So we have got our correct answer for this question, in which 4 and 4 ohms resistance connected in parallel will give 2 ohms of equivalent resistance. Similarly, इसे भी हम parallel combination के अंदर solve कर सकते हैं. So answer हमारे पास equivalent resistance के अंदर जो है वो 1 ohms आ जाएगा. Similarly, यहाँ 3 resistance है. If we solve these resistance in parallel and result of this parallel resistance connected in series with this 2 ohms, तो ये हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है. इसको सॉल्व करके हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. So in question number 12, the quantity that remains same in parallel combination. Parallel combination के characteristics हमने resistance से related भी पढ़े थे, साथ साथ हमने capacitor में भी पढ़े थे, series और parallel combination. So this is our chapter number 14, current and electricity. So parallel combination के अंदर हमने जो main characteristics पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि voltage हमेशा सेम रहता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. चाहे कोई भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो पैरेलल में, जो टोटल वोल्टेज है वो हमेशा सेम रहता है. जबकि अगर हम करंट की बात करें, सो द टोटल करंट इज द सम ऑफ ऑल द करंट्स.
जो टोटल करंट आई होता है वो हमेशा बराबर होता है तमाम करंट्स के सम के. लेट्स से वी हैव 3 करंट्स, सो टोटल करंट इन करंट्स के बराबर होगा, जबकि जो टोटल वोल्टेज है वो बराबर होता है तमाम कंपोनेंट्स के अंदर. एंड द फाइनल characteristic of a parallel combination in such that in parallel combination the total resistance or equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each resistance. तो ये वो characteristics हैं जो कि हमने series combination में पढ़े थे. So quickly the correct answer for this question is option A. The voltage remains same in the parallel combination. So let's come to question number 13, that is from chapter number 15, Electromagnetism. Or in this diagram we are shown with a current carrying conductor. हमारे पास एक straight current carrying conductor है और हमें identify करना है point P और point Q को. So as we can see that अगर हम अपने right hand grip rule को recall करें, right hand ग्रिप रूल, इस राइट हैंड ग्रिप रूल को रिकॉल करें. सो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, सो वी कैन यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल. एंड द राइट हैंड ग्रिप रूल वी हैव टू थिंग्स, आर थंब एंड कर्ल्ड फिंगर्स. ये दो चीजें हमारे पास होती हैं जिसमें थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट and the curved finger shows the direction of field, that is magnetic field. So this P is the conductor in which current is flowing in that direction. So this is our current and this is our magnetic field. So point P is the direction of current and magnetic field. So option B is the correct answer for this question number 13. So quickly, let's move to another question. We have question number 14, that is from chapter 15, Electromagnetism. So we are asked about our transformer, that is an electrical device that is used to increase or decrease the alternating voltage. So we have to identify the working principle of our transformer. So the जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है किसी एक ट्रांसफार्मर का, that is known as mutual induction. So Coulomb law is the incorrect option. This is related to the force between static charge. Similarly, self-induction is a process of inducing an EMF in the same coil. So this is the incorrect answer. And the Fleming left-hand rule is a rule that is used to describe the direction of the magnetic force. So clearly the correct answer for this question is option C. So let's come to another question, question number 15. The energy conversion that take place in an AC generator. So this is our question from chapter 15, Electromagnetism, and the energy conversion is asked in an AC generator. So AC generator को अगर हम recall करें तो it is a device that is used to produce electricity or induce current by the conversion of mechanical energy or kinetic energy into the electrical energy. So the correct answer is mechanical energy into electrical energy. इस current AC generator के अंदर we have a coil that is connected to the turbine and the ends of the coil are connected to the slip rings and the external circuit. So turbine is moved by any means, by means of waterfall or by the steam or by any means. हम wind के through turbine को move करें, we can move the turbine by using the steam, or we can rotate the turbine by the waterfall. So the kinetic energy of all those things will be converted into our electrical energy. And if we recall one more thing about the AC generator, that is its working principle. So this
the working basic working principle of an AC generator is electromagnetic induction. Okay, so question number 16. It is again from our chapter number 15, Electromagnetism. The magnitude of induced EMF, हमें बताना है कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर, किस वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इफेक्ट नहीं होता. सो दिस इज द सेम प्रोसेस जिसकी अभी मैंने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन विच वेन एवर देर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑन अ कंडक्टर दैट इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑन दैट कंडक्टर, जिसके कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स को मैं यही रिकॉल कर दूं. वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कंडक्टर में Similarly, uh, similarly जो amount of current है that is passing through the coil, क्योंकि current जितना ज़्यादा pass होगा उतना ज़्यादा EMF induce होगा, and the speed of the relative motion between the coil and the magnet. So this is also one of the factor. So the correct option for this question is option A, resistance of the coil. So induced EMF is produced due to the प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कि रेजिस्टेंस कॉइल की ज़्यादा है या कम है, बिकॉज दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. Okay, so let's come to another question, question number 17, that is from our chapter number 16, Basic Electronics, in which we are asked about the thermionic emission. So if we recall this process in which a metal surface is heated, electrically heated, and by this process we get some particles that are emitted from the surface of the metal, and when a filament is heated, a beam of tiny particles is emitted from it. तो यहाँ इस सवाल के अंदर हमें उन्हीं बेसिक पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया है कि वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं. सो जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि वो पार्टिकल्स जो कि मेटल के सरफेस से एमिट होते हैं, ऑब्वियसली दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकली हीट करने से आसानी से मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो सकते हैं. So the correct option for this question is electron. 17 का जो correct answer है that is option B. Okay, so let's move to another question, that is question number 18. So this question is from chapter number 16, Basic Electronics, and we have to identify the simple circuit symbol for the Nand gate. So this triangle with one input is our NOT operation. Similarly, this is our OR, and a circle with OR gate, that is NOR. And this is the correct option of NAND gate. तो अगर हम यहाँ से सर्कल को रिमूव कर दें, सो दिस विल बिकम एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन विद अ नॉट अहेड ऑफ इट, that is NAND gate. So correct option for this question is option B. So question number 19, in which that is from chapter number 17, that is information and communication technology. So when radio waves are received by the antenna, जो रेडियो वेव्स हैं जैसे ही एंटीना को रिसीव होती हैं, टच करती हैं, सो वो जो एंटीना है कन्वर्ट दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि वी हैव द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. सो हमारा जो एंटीना है वो क्या करता है, बेसिकली हमारा एंटीना जो है वो रेडियो वेव्स को जैसे ही रिसीव करता है, उन रेडियो वेव्स को देन इट कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. रेडियो वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स.
So let's come to another question, that is question number, I think, 20. Okay. So this question number 20 is once again from our chapter number 17, the information and communication technology. So let's read out this question. If a call is made from a mobile to another mobile, then the radio signals of a particular frequency are first sent to what? So जब एक फ़ोन से, लेट्स सपोज दिस इज़ फ़ोन ए एंड दिस इज़ फ़ोन बी. सो फ़ोन ए क्या करता है, फ़ोन ए जो है वो जब फ़ोन बी को कॉल कर रहा है, so what happens is that this all communication is based on electromagnetic waves or simple radio wave. So जो radio wave का signal है वो move करता है towards the station of the caller, और इस स्टेशन से the radio waves moves towards the satellite, and the satellite sends the signal to the station or main center of this receiver. This is our caller and this is our receiver. So satellite then send the signals to the station of the receiver, and then finally वो signal reach करता है to the receiver mobile phone. So the correct option for this question is option C, that is the base station of the caller. Okay, so let's move towards another question, that is question number 21. Which of the following particle is negatively charged particle? Negative charged particles हमें identify करना है. So we know that neutrons are neutral particle, while proton is positive, alpha particle is positive, and beta particles are the negatively charged particle. So simple question with the option A, beta is the correct answer. Which of the following has the highest ionization and penetration power? हमें आयोनाइजेशन मैक्सिमम किसकी होती है और पेनिट्रेशन एबिलिटी जो मोस्ट वो किस पार्टिकल की होती है वो आइडेंटिफाई करना है. सो अबाउट द आयोनाइजेशन, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, दैट बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, among those, the alpha is the most ionizing, while the gamma is the least ionizing. Similarly, about the penetration abilities of these radiations, alpha, beta and gamma. The gamma is the most penetrating because of less charge, while the ionization is most in alpha particles due to its large mass and charge. So ionizing is alpha particle and the penetration is beta radiation. So the correct option is option B. Okay, so let's come to question number 23. And in question number 23, कार्बन डेटिंग के मेथड के बारे में सवाल किया जा रहा है. सो दिस इज चैप्टर नंबर 18. The all the questions are from chapter 18, radioactivity. So carbon dating is a method for the determination of the age of the ancient object containing organic material. So we have to identify that which carbon isotope is used in this process. So for this purpose, we use carbon 14 as the dating purpose. So date carbon dating के लिए we use carbon 14. So option C is the correct answer. So let's come to question 24. This is also from our chapter number 18. So during nuclear fusion reaction, when the hydrogen nuclei are converted into helium atom. So what happens during this process? Helium फ्यूजन प्रोसेस की बात हो रही है और साथ साथ हमें कहा है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होके फॉर्म करते हैं हीलियम एटम को. So during this process, less amount of energy is released, huge amount of energy is absorbed, amount of reactant decreases due to energy release, and the amount of reactant increase due to energy absorbed.
सो इस प्रोसेस के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि इन फ्यूजन रिएक्शन टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हीलियम एटम। हीलियम एटम फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है जो कि फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ with the huge amount of energy released as the reaction proceed. So the correct option for this question is option C. You amount of reactant decreases due to a large amount of energy is released. So जैसे जैसे reaction होगा वैसे वैसे इसमें जो helium atom है वो फॉर्म होता जाएगा और जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है या जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो साथ साथ डिक्रीज होते जाएंगे। Okay, so the final question for from this year, that is question 25 from chapter number 18, radioactivity. All of the following are the harmful effects of न्यूक्लियर रेडिएशंस। तमाम जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट हैं एक्सेप्ट दी वन। सो हमें वो ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई करना है। सो वी हैव स्टडीड दैट द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन द आई इज ड्यू टू द harmful effect of nuclear radiation. Similarly, the cancer of blood cells and the redness and sores on the skin. These are the effects that are due to the uh, harmful effects of nuclear radiation, while the enlargement of the liver is not caused due to the harmful effect, or it is not the harmful effect for caused by the nuclear radiation.